Okay, so we have the chapter nuclear chemistry and radioactivity. First of all, when we talk about nuclear chemistry, what strikes your mind? So protons, neutrons, nucleus. The chemistry related with the nucleus, which consists of protons and neutrons. Okay, so nuclear chemistry is related to nuclear reactions. So अब तक जो हमने reactions किए हैं, when we talk about chemical reactions, and in this chapter we are going to talk about nuclear reactions. What is the difference between the two? Is it the same or different? So it's different. What is the So in difference? this, say electrons are involved in chemical reaction and nuclear reaction, nucleus is involved. Perfect. Very good. And so the amount of energy released in chemical reactions is very less compared to. Nuclear reactions. Perfect. Chemical reactions always have a change in the electron arrangement. So chemical reaction is related with the extra nuclear electrons. But nuclear reactions are related with the change in the atomic nuclei, meaning it is related with the change in the protons and neutrons in the nucleus. So in chemical reaction, the nucleus remains unaffected, meaning protons and neutrons are never changed. Nuclear reactions may electrons remain unaffected, but the protons and neutron changes. Clear? So that is a basic difference before we move on to understanding the other aspects related to nuclear chemistry. केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को चेंज करता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अनचेंज रहता है, एंड वाइस वर्सा हैपेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. So, nuclear chemistry is a branch of physical chemistry which involves the study of reactions involving changes in atomic nuclei. Involving the changes in atomic nuclei. And this branch of physical chemistry is very much important because it finds lot many applications in different fields. जैसे geologist uses this nuclear chemistry to understand the changes occurring on the Earth's surface. Astronomers uses to study nuclear reactions taking place in stars, and also the solar system is associated with lot of nuclear reactions involving hydrogen and helium. So even there, the nuclear chemistry is important. And chemists uses this to study the interaction of radiation emitted from nuclear reactions within the living system. So we have a treatment called radiotherapy, which involves the use of the radioactive elements, which in turn is related to nuclear reaction or the nuclear chemistry field. ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, and there are lot many other applications which we will understand as and when we understand the concept. Then types of nuclear reactions. Few of them you might already heard of and कुछ examples भी आपको ध्यान रहेगा. So let's understand the types of nuclear reactions in detail. The first is nuclear fission. Looking at the name, what do you understand? So splitting. Splitting. So fission meaning breakdown of a bigger nuclei into the smaller nuclei. So you can see the example. There is a uranium nuclei with atomic number 92 and the mass number 235, which is bombarded or hit with a neutron, and it splits up into barium nuclei and krypton nuclei with other particles, let's say neutrons. ठीक है, तो nuclear fission involves the breakdown of a bigger nuclei into the smaller nuclei, and these all nuclear reactions are associated with a huge amount of energy. So this 200 MeV indicates 200 mega electron volt of energy, which is huge energy.
By the way, how much is 1 electron volt energy in joules? So 1.6 into 10 raised to power negative 19. Perfect. 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. Atomic structure में हम कर चुके हैं. So 200 mega electron volt would be 200 into 10 raised to 6 into 1.6 into 10 raised to minus 19, and you can get the energy in joules. That's for one atom per nucleus. So if I talk about the energy per mole, then we have to multiply by 10 raised to power 22. 10 raised to power 23. 23, sorry. 6 into 10 raised to 23. That's simply the Avogadro's number. Okay, so that's nuclear fission. अब उससे उल्टा न्यूक्लियर फ्यूजन. तो फिशन इज ब्रेक डाउन, फ्यूजन इज combining together. So you can see the example of a deuterium nuclei. How do we represent deuterium? An isotope So of hydrogen. H21. Pardon? H21. H, 2 and 1. So how many protons does it have? So 1. 1. And neutron? 1. 1. So you can see this is the neutron, this is the proton. And then it is fused or combined with tritium, which is 1H3. Proton is again 1 because ये दोनों isotopes एक दूसरे के, and the neutrons are 2. तो दो neutrons और एक proton. अब fuse होने के बाद we will have 2 protons and 3 neutrons. And finally, it fuses to give helium with the elimination of a neutron. So helium जो है, that is helium 2, 4, which have 2 protons and 2 neutrons. तो जो एक न्यूट्रॉन है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, so I can actually write down this reaction as 1H2 fuses with 1H3, giving you helium 2, 4. Now, जैसे chemical reactions में all the atoms must be balanced on both the sides, nuclear reaction में the number of protons and the neutrons should be balanced on both the sides. So if you look at this, here the protons are already balanced with 2 and total mass number 5 आ रहा है, but helium में 4 ही है, मतलब one of them needs to be balanced with a 0 charge. Now the particle which is having a mass of 1 AMU but is neutral is nothing but a neutron, and that's how a neutron is eliminated in this fusion reaction. समझा? So what if neutrino and all that? They are also the particles which are present in the nucleus. Neutrino, anti-neutrino, meson particles. ठीक है, लेकिन जो अपना स्कोप है for this topic is related only with protons and neutrons. We are not going into the details of the other subatomic particles. मतलब we know that the main 3 subatomic particles which governs the atomic structure is protons, neutrons and electrons. लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे subatomic particles हैं. ठीक है, लेकिन उसका डिटेलिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे. Okay. Yeah. Then the third one is radioactive decay. What do you understand by decay word? It's a beta emission. Decay is always a beta emission. So it's spontaneous emission of any particle. Perfect. That would be a better definition. Spontaneous emissions. Now, spontaneous matlab it happens on its own. तो radioactive substances जो है वो बहुत ही ज़्यादा unstable होते हैं. Now, क्योंकि वो unstable होते हैं, they have a tendency to emit some particles and try to become stable. So that spontaneous process of eliminating or emitting a particle to obtain stability is called as radioactive decay.
So with the emission of a particle, there is also loss of the energy, and with loss of the energy, the stability is higher. So that is radioactive decay. And then the fourth type of nuclear reaction is artificial transmutation. Now, what do you understand by the word transmutation? Okay, mutation का मतलब So altering something. altering something. So mutation is basically to change from one nuclei into another. Artificial matlab we are doing it by bombarding it with some other particle. So in this example, you can see there is a nitrogen nuclei 714, which is bombarded with alpha particle, that is nothing but the helium nuclei. This is the alpha particle, and it converts into oxygen nuclei 817 with the emission of a proton. So ट्रांसम्यूटेशन का मतलब एक न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना by bombarding it with some particle. Clear? तो fission का मतलब splitting of a bigger nuclei into smaller nuclei. Fusion मतलब two smaller nuclei can combine to form a bigger nuclei. Radioactive decay is spontaneous emission of a radioactive element by emission of a particle. एंड ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने का आर्टिफिशियल प्रोसेस. Fine, this is kind of a chemical reaction where we convert one reactant into the product. यहाँ पर we are converting one nuclei into another nuclei, and this would be a nuclear reaction. ठीक है. अब similarity between the solar system and the structure of atom. So जब atomic structure की बात करते हैं, and the structure given by Rutherford was basically having the resemblance to the solar system. तो जैसे solar system में sun is at the center and the planets are revolving around the sun, वैसे ही in the atom we have the tiny center which is the nucleus, and there are new electrons which are revolving around the nucleus. What is the size of the nucleus? Radius of nucleus? So like the term or The the value, size. the order. Okay, we know that the nucleus is very, very tiny in comparison to the atom ka structure. In fact, most of the space in an atom is empty or vacant. So, through the Rutherford's alpha particle scattering experiment, he found that the radius of the nucleus was of the order 10 power minus 15 meter, जिसको हम 1 फर्मी मीटर के हिसाब से भी बोल सकते हैं. 1 फर्मी मीटर. और जो एटम का रेडियस है दैट इज अबाउट 10 पावर माइनस 10 मीटर, विच इज 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. सो यू कैन सी द साइज, द न्यूक्लियस इज 10 raised to 5 times smaller as compared to the atom. That's why we call it as a tiny center. And this nucleus consists of protons and neutrons, which are together and collectively called nucleons. So now onwards, if I speak the term nucleons, it would refer to protons or neutrons in the nucleus. Then this important note, the radius of nucleus is given by R equal to R naught into A raised to 1 by 3, the cube root of A, where R naught is a constant which is common to all nuclei, and its value is 1.33 into 10 power minus 15 meter, or we can say 1.33 FM. What does F stand for? F stands for So Fermi meter. Fermi. Fermi. तो जैसे pico is 10 power minus 12 ना, Fermi is 10 power minus 15. This is the abbreviation.
used for the units. Okay, अब यहाँ पर let's take an example of, let's say, calcium. So I have a calcium with the nucleus 20 and 40. So if I want to find the radius, then the radius of the calcium nuclei would be equal to 1.33 Fermi meter times the atomic mass, which is 40 and raised to 1 by 3. Okay. So cube root of 40 would be between 3 and 4. Whatever value we have, we can just multiply and get the radius of this nuclei in Fermi meter. ठीक है, जैसे we have nickel as 28 and 64. If I want to find the radius of the nickel nuclei, it will be equal to 1.33 Fermi meter into the 64 cube root. This becomes simple because direct value आ जाएगा 1.33 into 4. ठीक है, so this would be somewhere 5.33 Fermi meter. मतलब the radii of the nickel nuclei is about 5.33 Fermi meter. तो जो order है वो Fermi meter में होगा, जो magnitude है that would be identified by the formula as given. Clear? Yeah, sir. Okay. Now the common terms associated with the nuclides. We have already discussed about these. So एक बार वापस isotopes. So isotopes are the atoms of same element or different element? It's the same element. Same element. Isotopes are atoms of the same element having same Protons and the same number of neutrons. same atomic number but different atomic mass number. तो जब मास नंबर अलग होगा तो उसका न्यूट्रॉन्स भी डिफर करेगा. मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी सेम but the neutrons would be different. Okay, and the simplest example of the isotope is hydrogen. We know that hydrogen have three isotopes, that is protium, deuterium, and tritium. So the bottom value always remains the same because protons यहाँ पर same रहेंगे. But if I talk about neutrons, then the number of neutrons is identified as top minus bottom. So 0 neutrons होगा protium में, 1 in the deuterium and 2 in the tritium. वैसे ही कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स है which are carbon 612 a stable isotope, then carbon 613 and carbon 614. 14 is radioactive meaning have a tendency to emit radiations. Okay, तो इसमें भी आप देखोगे तो number of neutrons are 6, 7 and 8. So isotopes are atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number. They have same number of protons, electrons but different number of neutrons. Now if I talk about physical and chemical properties, which of the properties would be same and which will be different? So chemical will be same and physical will different. Perfect. Because chemical properties are determined by So electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेम होने की वजह से isotopes have the same chemical properties but different physical properties. These are all well-known properties which you should be able to understand. Same chemical properties. So now isobars are atoms of So same mass number but different atomic number. perfect. Firstly, they are atoms of different elements having the same atomic mass number but different atomic number. Can you tell me example of isobars? One example which was given was argon, So carbon potassium. and nitrogen.
Yes, there is carbon and nitrogen definitely. And what configuration? So 614, 714. Perfect. Carbon 614 would be isobaric with nitrogen 714. तो यहाँ पर टॉप वाला नंबर सेम होगा, बॉटम नंबर डिफर करेगा. अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इसके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो अलग ही होंगे. एंड एटॉमिक नंबर भले ही सेम हो, बट अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो न्यूट्रॉन नंबर अलग हो जाता है. मतलब यहाँ पर ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर इज डिफरेंट. प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स तीनों ही डिफरेंट होते हैं. जैसे द अदर एग्जांपल इज आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम with atomic number 18, 19, 20 and the mass number 40 would be isobaric with each other. What about the properties over here? So both are different. Both are different. बिकॉज यहाँ पर Z अलग हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफर करेगा. अब एटॉमिक मास सेम है तो जो मास वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज है खाली वही सेम होगी, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. मतलब आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दोज डिपेंडेंट ऑन मास वुड बी सेम. Those dependent on mass would be same. Next is a new concept, that is mirror nuclei. Mirror nuclei are isobars. Mirror nuclei are isobars where the number of protons of one element, let's say Z1, equals the number of neutrons of element 2, that is N2, and number of protons of element 2, that is Z2, equals the number of neutrons in element 1, that is N1. यानी एक एलिमेंट का प्रोटॉन्स दूसरे एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है और वाइस वर्सा भी ट्रू होता है. So look at the example. 1H3 of hydrogen, that is tritium, is having a mirror nuclei relation with helium 23. So मैंने क्या बोला, mirror nuclei के लिए कंडीशन क्या होता है? The number of protons of one equals the number of neutron of other. How many neutrons do we have here? 3 minus So 2, one. na? 1. So this proton is equal to neutron number and vice versa. इसका जो proton number है 2, that will be equal to 3 minus 1, that is the first वाले का neutron number. Similarly यहाँ पर this protons would be equal to 13 minus 7 neutrons of nitrogen, and similarly ये वाला proton number इसके neutron के बराबर होगा. तो ये एक दूसरे का mirror nuclei कहलाता है. ठीक है. So you can directly see this should be equal to difference of this and this should be equal to difference of this. Clear? Now Yeah, sir. textbook में जो definition दिया ना, just have a look at it. It is quite confusing to understand that definition. On page 191, it says that these are isobars in which the number of protons and neutrons differ by 1 and are interchanged. Number of protons and neutrons differ by 1. मतलब यहाँ पर अगर प्रोटॉन्स 1 है और इसका न्यूट्रॉन 2 है तो डिफरेंस जो है हमेशा 1 का होगा. सिमिलरली यहाँ पर प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 1 है, अगेन डिफरेंस लोगे तो 1 का होगा. ठीक है. सो इन अ वे दैट इज अ कंडीशन फॉर द मिरर न्यूक्लाई. और डेफिनेशन देखने के लिए एक का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन से बराबर होना चाहिए, दूसरे का न्यूट्रॉन पहले वाले प्रोटॉन से बराबर होना चाहिए. दैट्स इट. दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर मिरर न्यूक्लाई. ठीक है. और दूसरा कंडीशन है दे शुड ऑल्सो बी आइसो बार्स. तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? आइसो बार्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन ऑफ वन इक्वल्स द प्रोटॉन ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा शुड ऑल्सो बी ट्रू. ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स डिफर बाय वन फॉर द न्यूक्लियाई इन कंसिडरेशन.
तो कोई भी न्यूक्लियाई आप उठा के देख लो मिलर न्यूक्लियाई का, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर करेगा 1 से। देन आइसोटोन्स, आइसोटोन्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम, So same neutrons, करेक्ट, number of neutrons. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल, So carbon and nitrogen. विच वन? So 13, 6 and 14, 7. So carbon 613 will have the neutron 7, nitrogen 714 also have the neutron 7, so they are isotones of each other. उसके अलावा एक और कॉमन एग्जांपल फॉस्फोरस का ले सकते हो विद सल्फर, where phosphorus 1531 having 16 neutrons would be isotonic with sulfur 1632 with same number of neutrons. Next, nuclear isomers. The nuclides with same number of protons and neutrons or the same mass number, which differ in energy states, are called nuclear isomers. तो न्यूक्लियर आइसोमर्स एक ही न्यूक्लियस का अलग अलग फॉर्म्स को रिलेट करता है, which have a difference in their energy, which have the difference in their energy or energy states. तो प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है या मास नंबर सेम है, इसका मतलब न्यूक्लियाई सेम ही एलिमेंट का है, लेकिन उसमें एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो एग्जांपल, कोबाल्ट 60 वाले दो न्यूक्लियाई है which are written as cobalt 60m and cobalt 60. So an isomer of higher energy is said to be in the meta-stable state, which have a relatively long lifetime and is indicated by writing m after the mass number. तो कोबाल्ट का जो न्यूक्लियाई है वो कोबाल्ट 60 ही होता है, लेकिन इसका एक न्यूक्लियर आइसोमर है जिसमें वन ऑफ द स्पीशीज, वन ऑफ द एलिमेंट हैज हायर एनर्जी देन द अदर। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि अगर इसका एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? So lower. लोअर होनी चाहिए, बिकॉज हायर द एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी। बट ऐसे न्यूक्लियर आइसोमर्स में जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का एनर्जी ज्यादा रहता है, इट इज फाउंड टू बी स्टेबल because it can exist for a relatively long lifetime as compared to the species having higher energy usually. ठीक है, इसीलिए ऐसे स्टेट को जहां पर डिस्पाइट ऑफ हायर एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ये जनरली न्यूक्लाइड्स के लिए पॉसिबल होता है। मेटा स्टेबल स्टेट मतलब एन एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी स्टेट। एक्सेप्शनली इसलिए बिकॉज एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद भी ये स्टेबिलिटी ज्यादा एग्जिबिट कर रहा है। क्यों करता है? देर आर रीजंस एसोसिएटेड विद इट, बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लियर आइसोमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ द सेम एटम differing in the energy states. The one with a higher energy, despite of the energy being high, is more stable as compared to other. And that stable state is called meta-stable state, which have a relatively long lifetime. Clear? समझा? Yeah, sir. Okay. So now we move on to classification on the basis of nuclear stability. Classification on the basis of nuclear stability. So up यहाँ पर you should wonder कि in the periodic table there are some atoms जिसका nuclear stable है और दूसरे कुछ atoms हैं जहाँ पर nuclides unstable होते हैं। इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिविटी एंड अदर न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जिस्ट। तो व्हाट इज द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लाइड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। सबसे पहले स्टेबल न्यूक्लाइड्स और अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स किसको बोलते हैं वो देख लो।
The number of electrons and the location of nuclei may change in outer sphere, but the number of protons and neutrons therein is unchanged. ऐसे nuclides जिसमें the number of electrons may change in outer sphere, but protons and neutrons is unchanged, will be a stable nuclide. तो नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स लाइक कैल्शियम सोडियम का करते हैं, उस केस में जो न्यूक्लियस है वो अनअफेक्टेड रहता है। तो ऐसे जो न्यूक्लाइड्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जनरली दे आर स्टेबल न्यूक्लाइड्स। और अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स वो होते हैं विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर्मिंग न्यू न्यूक्लाइड्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अंडरगो करके कुछ नया न्यूक्लाइड अगर बना रहा है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ जाता है, दोज वुड बी क्लासिफाइड इनटू अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स। अब फैक्टर्स। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज इवन ऑड नेचर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। even and odd nature. Looking at the table, if the number of protons and the number of neutrons are even, then the number of such nuclides which are stable are equal to 165, which is highest in the combination given. मतलब अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर इवन है, then the number of such nuclides are maximum and it is quite high, equal to 165. अब इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हमारे पास लेट्स से मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, कार्बन 612 इज अ वेरी वेरी स्टेबल न्यूक्लाई, राइट? इसीलिए इसको हम एज अ स्टैंडर्ड भी लेकर चलते हैं टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट। Do you remember the definition of 1 AMU which we had discussed in Mool concept? So 1/12 of the mass of a C12 carbon atom. Excellent. 1 AMU is equivalent to 1/12 the mass of one atom of carbon 12. 1/12 the mass of one atom of carbon 12. So here carbon 12 was taken as a standard because of its high stability. और ये stable nucleus क्यों है? क्योंकि इसमें number of protons 6 है और number of neutrons भी 6 है। So here the protons can exist in the pairs. मतलब जब दो प्रोटॉन साथ में बाइंड करके खुद के साथ रहते हैं, दे आर सेड टू बी द प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स में 3 पेयर्स बनेंगे, 6 न्यूट्रॉन में भी 3 पेयर्स बनेंगे। मतलब कोई भी न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अकेला नहीं छूटेगा, सबकी जोड़ी बनी हुई है। So we say that in a nucleus, if each proton is having a pair, उसका जोड़ीदार अगर प्रेजेंट है, then the nucleus is highly stable. अब वापस एक कंफ्यूजन दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? So repel. Will repel. But the fact is, apart from the repulsion, there is also one special force, a force of attraction, which is holding the nucleons together in the nucleus. और यही स्पेशल फोर्स को स्टडी किया गया था बहुत सालों तक, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर, विथ अ combination of even protons and even neutrons, each of the nucleon is having a pair, due to which the stability of this type of nuclides is maximum, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियन अकेला नहीं छूटा है। लेकिन जब आप इवन ऑड या ऑड इवन का कॉम्बिनेशन करते हो, जैसे एग्जांपल हमारे पास है कार्बन 613 का, तो इसमें आई हैव 6 प्रोटॉन विद अ 7 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के तो 3 पैर होंगे, बट न्यूट्रॉन के 3 पैर के अलावा देयर विल बी 1 न्यूट्रॉन विच विल रिमेन अनपेयर्ड, मतलब इसको कोई जोड़ीदार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब न्यूक्लियन इज नॉट हैविंग एनी पेयरिंग अवेलेबल,
the stability of such nuclides is less. And there is only one third of the even type of nuclides in the periodic table. ठीक है, ये 165 है, ये 55 है, एग्जैक्टली इसका वन थर्ड है. और सेकंड अगर देखोगे ऑड इवन कॉम्बिनेशन में भी अबाउट वन थर्ड के ही न्यूक्लाइड्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड इसका एग्जांपल है फ्लोरीन 9 एंड 19. तो अब मेरे पास 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन्स है, तो इसमें 4 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, जिसकी दो जोड़ी नहीं बन पाएगी. ठीक है. और ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन, आई कैन हैव द एग्जांपल ऑफ 1H3 नहीं 1H2 ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. तो प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ भी नहीं मिल रहा है. तो दोनों ऑड अगर होंगे, ऑड कॉम्बिनेशन में, देयर विल बी टू न्यूक्लियॉन्स विच आर अनपेयर्ड. मैंने आपको बोला था न्यूक्लियॉन जब बोल रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आइदर द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बोथ. तो इस केस में मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अलग बात कर रहा हूं. और हेलो, वेर वी लॉस्ट. हेलो. So H21. So you were writing that. ओके. हाँ. So last में when we have odd combination, the number of such nuclides are least. There are just 4 nuclides in the periodic table with reference to the elements which are discovered. तो उसके एग्जाम्पल में we have H12 that is deuterium, जिसमें there is one proton and one neutron. तो इसमें ना तो प्रोटॉन किसी और प्रोटॉन के साथ पैर कर सकता है, ना ही न्यूट्रॉन किसी और न्यूट्रॉन के साथ पैर कर सकता है, बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में दो न्यूक्लियॉन्स यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है. और जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतना स्टेबिलिटी कम होता है. दैट्स द रीजन even combination gives you the maximum stability, odd gives you the least stability. And जो even odd even combination है, that is moderately stable. Is this point clear? Yeah, sir. Okay. So the first factor is to check the even odd nature of number of protons and neutrons. Even is max stable, odd is least stable, even odd even is moderately stable. That's the conclusion. If you want, you can write the examples besides that. एक और कॉलम बना दो और एग्जाम्पल लिख लो. फर्स्ट में कार्बन 612, द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड, फॉलोड बाय कार्बन 613, फ्लोरीन 919 and deuterium 1H2. So conclusions I have already discussed. Whatever things I discussed over here, they are the conclusions which is also given in the book. Now, the next factor to determine the stability is neutron to proton ratio, which is N by Z. So when N by Z या N versus Z का graph is plotted, it is observed that many of the nuclides which are stable lies in a range where the N by Z was greater than 1. तो यहाँ देखो N by Z equal to 1 का, यानी N equal to Z वाला एक line draw किया है. And here the nuclides are plotted. Different nuclides are plotted. अब पहला ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो जो स्मॉलर न्यूक्लाइड्स होते हैं मोस्टली अप टू 20-25, these are found to be following the n by z equal to 1 वाला रूल. जैसे ऑक्सीजन 816 ले लो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इज 8 by 8 which is equal to 1.
कार्बन ले लो 6 और 12 का, n बाई जेड का रेशियो 6:6 यानी 1 आ जाता है। ठीक है। कैल्शियम 2040 ले लो, तो उसमें भी न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन 20/20 दैट इज 1 का रेशियो आ जाता है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लाइड्स up to the atomic number 20 are following the n by z equal to 1 relation। अब जैसे ही हम 25 के ऊपर जाते हैं, these nuclides का n by z ratio starts deviating from n by z equal to 1, यानी n equal to z वाला लाइन, और वो डिविएट होकर n by z ग्रेटर देन 1 का रिलेशन शो करता है। बराबर। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि n by z ग्रेटर देन 1 होने पर why the nuclides are becoming stable, what is the reason? सी, ये वाले न्यूक्लाइड्स में आप देखोगे तो इवन इवन वाला जो रूल है वो सेटिस्फाई हो जाता है, बट n बाई जेड अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो वाला रूल यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। तो उसका क्या फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये स्टेबल है? तो मान लो कोई न्यूक्लाइड है, लेट्स से वी हैव आयन which is 26 and 56. The number of protons are equal to 26 and neutrons are equal to 30. अब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स के अलावा यहां पर रिपल्सिव फोर्स तो है ही। ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शंस होंगे। नाउ जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना द अमाउंट ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन द प्रोटॉन्स वुड इंक्रीज। जब तक हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम जैसे न्यूक्लाइड्स थे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज्यादा नहीं थे। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स के बीच में प्लस प्लस के बीच में जो रिपल्शंस है वो भी इंक्रीज होगा। वो रिपल्शंस न्यूक्लाइड को अनस्टेबल कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो दिस न्यूट्रॉन्स कीप द प्रोटॉन्स अपार्ट and minimize the repulsions between them and increase the stability। तो heavier nuclides में when the protons are lesser and the neutrons are more, n by z ratio becoming greater than 1, this is important because as we have the number of protons increasing, the repulsions will increase, which will make the nuclei unstable। So to minimize the repulsion, we need to have more neutrons, जो क्या करेगा, प्रोटॉन को दूर दूर रखेगा, और जितना दूर रखेगा उतने रिपल्शंस मिनिमाइज होंगे और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yeah, sir. ठीक है। सो स्मॉलर न्यूक्लाइड्स हैव n बाई z इक्वल टू 1, heavier nuclides have n by z greater than 1, because to hold such number of protons with a higher stability would have been difficult। That's the reason the number of neutrons are higher in this type of heavier nuclides which are stable। समझा? सिंपल है। क्लियर? Yeah, sir. नेक्स्ट वी हैव मैजिक नंबर्स। Magic numbers are basically the number of protons or neutrons or both of them. Number of protons or neutrons or both of them, wherein it is observed that a nuclide having these numbers are found to be exceptionally stable। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल नंबर्स, इसलिए इन स्पेशल नंबर्स को मैजिक नंबर्स नाम दे दिया गया था। एंड दीज नंबर्स आर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। 2, 8, फिर 2 का 20 प्लस 8 करो 28, 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126। Clear? Yes.
Now, one example which is given over there, वही लेता हूँ. It is lead 82 and 206. तो अगर यहाँ पर if I talk about the protons, it is equal to 82. I think it's 208. Yeah. हाँ. Protons 82 है और न्यूट्रॉन्स आर ह्यूज. 208 माइनस 82 करोगे तो 126 मिलेगा. तभी फंडा वही है कि 82 प्रोटॉन्स में रिपल्शंस तो काफी हैवी होगा और उसकी वजह से न्यूक्लाइड अनस्टेबल हो सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम न्यूट्रॉन्स 126 है, तो ये 126 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को सेपरेट करेगा और उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमाइज करेगा और उसके बेसिस पे इट विल हैव अ हायर स्टेबिलिटी. So species or the nuclides having these numbers, which is either the proton or neutrons or both of them, are found to be stable. समझा? Yeah, sir. Next is nuclear potential, या फिर आप इसको न्यूक्लियर एनर्जी कंसिडर कर लो. न्यूक्लियर एनर्जी. तो अब समझो यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसमें प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है. प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. बराबर. अब प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से लॉजिकली रिपल्शंस होंगे और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई तरह का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. दिस इज द थॉट प्रोसेस. बट एक्चुअली विद इन द न्यूक्लियस, apart from the repulsions between proton proton, there are attractions between proton proton, proton neutron and neutron neutron. अब ये कैसे टाइप का अट्रैक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज नॉट to be understood because that's an observed fact and a theory which was postulated to understand the stability of the nuclides. तो ऐसा माना गया था कि रिपल्शंस के अलावा कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है, irrespective of the charge which is present on the proton or the neutron. तो एक स्पेशल तरह का अट्रैक्टिव फोर्स भी है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी छोटी सी जगह में पैक करके रखता है, होल्ड करके रखता है. ठीक है. इट इज जस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 15 मीटर. एक फर्मी मीटर मतलब इस डॉट से भी छोटा. और इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर सिर्फ रिपल्शंस के बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो न्यूक्लाइड कभी भी स्टेबल नहीं होता. तो ऐसा माना गया था कि रिपल्शंस के अलावा कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी छोटी सी जगह में बाइंड करके रख रहा है. So the theory is protons and neutrons have the repulsions as well as attractions. प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस होते हैं और अट्रैक्शन पीपी का, पीएन का और एनएन का होता है. ठीक है. आ रहा है समझ में? Yeah, sir. अब इसको बाइंड करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा. So that energy associated with the nucleus is called nuclear binding energy. Nuclear binding energy. So नाम में ही definition समझ में आ जाएगा कि it is the energy which is used for the binding of the protons and neutrons within a small nucleus. The energy associated with the binding of protons and neutrons is called nuclear binding energy. And the same energy will also be used to break down the nuclide. मतलब अगर मैं उतनी ही एनर्जी जो बाइंड करने के टाइम यूज हो रही है उतनी एनर्जी सप्लाई कर दूं तो क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से सेपरेट होकर वो न्यूक्लाइड टूट सकता है? Yeah, sir. Because it's equal to the energy that's keeping them intact in the first place. So परफेक्ट. एंड इजंट दैट सिमिलर टू अ केमिकल रिएक्शन? अगर हम CaCO3 में कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं
तो हमें पता है इट गिव्स यू CaO एंड CO2. ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन. अब अगर हम इसमें रिवर्स रिएक्शन की बात करें कि इफ आई हैव CaO एंड CO2 and I react them in a closed vessel, it will combine together to give you the calcium carbonate. तो अगर इस केस में हमने x किलो जूल की एनर्जी थी तोड़ने के लिए, तो इस केस में ये जब जुड़ेगा तो x किलो जूल की एनर्जी रिलीज होगी. इट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. करेक्ट. Yeah, sir. तो जितना जोड़ने में एनर्जी लगता है उतना ही एनर्जी तोड़ने में लगेगा. तो यू कैन डिफाइन इट आइदर वेज. बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड during the binding of protons and neutrons in the nucleus. Yeah, it is the energy which needs to be supplied to break down the nuclide into the protons and neutrons. Clear? Clear? Yeah, sir. Okay. Next है nuclear binding energy and the mass defect. Now, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज इन टर्न रिलेटेड टू अ मास which is called mass defect. अब ये mass defect क्या होता है? It is observed that the calculated mass of the nucleus and the actual mass of the nucleus have a slight difference. That difference is called as the mass defect. And this mass defect is the actual parameter which is responsible for the holding of the protons and neutrons together. And this mass when converted to energy is basically called as nuclear binding energy. मतलब जब भी कोई न्यूक्लाइड नेचुरली या आर्टिफिशियली अवेलेबल होता है तो उसमें मासेस का डिफरेंस आता है. एंड दैट मास डिफेक्ट इज कॉल्ड डेल्टा एम, represented by delta m, and it's the difference of calculated mass with the observed mass. अब मुझे बताओ, if I have a nuclide like carbon 612, how will you calculate the mass of this nuclide? Calculated mass कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे? So taking the average of the three isotopes mass number, not the average, sir, but like uh, their relative Ah, abundance and then that is calculating. the mass number for carbon in general. So that is isotopic mass. मैं सिर्फ इस न्यूक्लाइड की बात कर रहा हूं, मैं कार्बन 613 कार्बन 614 की बात नहीं कर रहा हूं. अगर मैंने आपको एक न्यूक्लियस दिया तो उस न्यूक्लियस का मास वो कितना हैवी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? So mass number. इट्स मास नंबर, एंड दैट इज इन टर्न इक्वल टू द नंबर ऑफ So nucleons. न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मास भी थियोरेटिकली ऐड होना चाहिए, बट नॉर्मली हम एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं बिकॉज दे आर द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन बीइंग द हेवीएस्ट. नाउ इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल सच दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड. इसीलिए हम मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं. एंड हियर वी से दैट द टोटल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द Nucleus. न्यूक्लियस बिकॉज वहीं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है. तो अगर मैं थियोरेटिकली कैलकुलेटेड मास की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दो नेग्लिजिबल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आई नीड टू कंसिडर. अब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन? एटॉमिक स्ट्रक्चर इन AMU. So 1.67 AMU. ओके, टेल मी इन So kg और ग्राम्स.
So 1.67 into 10 is about negative 26 or नहीं, 27. So 27 kg. और न्यूट्रॉन कितना फर्क है? so 1.7 into 10 is so नहीं, just a bit. इतना बड़ा फर्क नहीं है. इतना बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू 10 पावर माइनस 27. सो प्रोटॉन का मास इज 1.672, न्यूट्रॉन का मास इज 1.674. It's hardly any difference, but still comparatively neutron is heavier than proton. And electron ka mass in kg is 9.1 into 10 power minus 31 kgs, या फिर AMU में 0.00055 AMU, जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं. और इसका अगर AMU में लिखे तो 1.0078 U है, और न्यूट्रॉन का 1.0086 U है. So MP represents the mass of a single proton. अब protons कितने हैं that would be identified by the atomic number. So I'll calculate as Z into MP plus neutrons are represented by A minus Z. So this will be A minus Z into Mn, and जो electrons है वो भी Z के बराबर है. So this is how for any nuclide I can calculate the mass. समझा? Yeah, so Okay. So calculated mass and observed mass का difference gives you the mass defect. And this mass defect then is converted into the energy which is responsible to hold the nucleons together. And that's where we come to the calculation for nuclear binding energy. Now, which equation relates the mass and the conversion into energy? Mass energy relation is given by बहुत फेमस है. so E equals MC square. Einstein's equation. If you have an object of mass m, then its energy associated with that would be E equal to mc square. So यहाँ पर m जो है वो अपना mass defect है, and multiply by c square I get delta m into c square as the nuclear binding energy. Clear? Yeah, so Okay. Now we will calculate the nuclear binding energy for 1 U mass. Now how much is 1 U mass in kg? एक AMU या एक U कितना होता है kg में? What do you multiply to convert the so U into 1.6 kg? into 10 is about negative 20. हाँ, यही 1.66 तो है into ना 10. कन्वर्जन. तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है. तो अगर 1 So U का we मास है, हाँ, so we 931.4, right? पार्डन, So 931.4 दैट इज MeV. इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Yeah. वो हम बाद में कन्वर्जन करेंगे. फिलहाल मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूँ. व्हाट यू सेड इज करेक्ट. 931 MeV वो इधर से ही आता है. जस्ट शो यू द कैलकुलेशन. So that is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kgs into SI unit में C is 3 into 10 raised to 8 meters per second. अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो and you convert into mega electron volt, this particular value comes out to be 931 MeV. 931 MeV. इसका अगर पावर देखोगे तो 10 raised to minus 19 आ जाएगा.
एंड व्हेन यू डिवाइड विथ 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, फाइनली आपको 931 इंटू 10 रेज टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आएगा। और 10 रेज टू 6 को मेगा बोल देते हैं, इसीलिए द वैल्यू इज शॉर्टली गिवन एज 931 MeV। दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 U ऑफ मास। अब जितना भी U मास दिया है उसके बेसिस पे आप मल्टीप्लाई करो 931 MeV से, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन MeV। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे हम लोग, बट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? So won't it be 3 into 10 is not 8 square because it's हाँ c हाँ हाँ हाँ, square. सॉरी सर, 3 into 10 to 8 स्क्वायर होगा। तो 9 into 10 to 16 ब्रैकेट ओपन करोगे 10 पावर -11 मिलेगा, और 1.66 इंटू 3 वुड गिव यू 5 के आसपास। And then when you divide by 1.6 into 10 power -19, you will get this mega electron volt value that you can do. Clear? Yeah, sir. So now in general, in the numerical, if you are given the delta M mass defect in U, that is unified mass में, then the binding energy would be equal to delta M in the unified mass multiplied by 931 MeV. Finally you get the answer in MeV. 931.4 है अगर एक्यूरेटली देखें तो, अप टू 4 डिजिट्स। क्लियर? Okay. Now there is one more factor for the stability of the nuclei, which is called binding energy per nucleon. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो हमें समझ में आ गया। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा? व्हेन आई राइट न्यूक्लियन, मतलब आई एम रेफरिंग टू व्हाट? It's a mass number. द मास नंबर। मतलब अगर कोई न्यूक्लाइड दिया है लेट्स से आयन का, दैट इज 26 एंड 56, एंड इसका जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो x MeV आ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वुड बी हाउ मच? Divided by 50, sir. परफेक्ट, x अपॉन 56 MeV। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इट गिव्स यू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वन न्यूक्लियन टू बाइंड विथ अनदर न्यूक्लियन, मतलब आइदर प्रोटॉन विथ प्रोटॉन और प्रोटॉन विथ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन विथ न्यूट्रॉन। तो एक न्यूक्लियन के लिए कितनी एनर्जी लगती है बाइंड होने के लिए, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। And the stability of those nuclides with respect to this parameter is determined with a direct relation। मतलब जिस न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, उतना उस न्यूक्लियाइड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। A very important relation. Stability is dependent or directly proportional to binding energy per nucleon. More the binding energy per nucleon, more will be the stability। तो ऐसा देखा गया है कि जो लाइटर न्यूक्लाइड्स हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाई। जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लाइड्स की तरफ जाते हैं, ग्राफिकली दिस पर्टिकुलर पैरामीटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। तो जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा उतना उसका स्टेबिलिटी भी कम होगा। लॉजिकल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मतलब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को होल्ड करने का एनर्जी, और अगर पर न्यूक्लियन वो एनर्जी कम है तो obviously the binding will be difficult, and in that case the nuclide would be unstable। Clear? Yeah, sir. समझा? Okay, there is a graph given on page 193, I've not included that।
So that graph gives you binding energy per nucleon का relation with the number of nucleons. तो आप देखोगे आयन वाला जो न्यूक्लियन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, मतलब इट इज अ वेरी स्टेबल न्यूक्लाइड। जैसे जैसे हायर या हेवियर न्यूक्लाइड्स की तरफ जा रहे हैं, दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, So decreasing. डिक्रीजिंग। सो द रिलेशन इज सिंपल, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। समझा? ऐसा नो? Yeah, sir. Okay. Now there is a problem given on page 194, problem 13.1. So we'll just discuss about that because theoretical concepts हमने discuss कर लिए हैं. Calculate the mean binding energy per nucleon for the formation of O816 nucleus. The mass of oxygen atom is 15.994 U. Now जब डेटा में दिया है कि mass of oxygen atom is so and so U, this mass is which mass? कौन सा मास होगा So इनमें can से? so can you repeat it? So uh, the question is the mass of oxygen atom is 15.994 U. तो क्वेश्चन में जो ये मास दिया है 15.994 U, ये कौन सा वाला मास है? atomic mass. हाँ, बट इज इट कैलकुलेटेड और द ऑब्जर्व्ड वन? So observe. ऑब्वियसली। तो जो डेटा में दिया जाता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड रहेगा। कैलकुलेटेड इज समथिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली। ठीक है। उसके बाद मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड न्यूट्रॉन आर 1.0078 एंड 87 U रिस्पेक्टिवली गिवन। तो अब वी हैव टू फाइंड द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो उसके लिए पहले बाइंडिंग एनर्जी ढूंढना पड़ेगा, और बाइंडिंग एनर्जी ढूंढने के लिए दो चीजें लगती है, एक तो कैलकुलेटेड मास और दूसरा ऑब्जर्व मास। कैलकुलेटेड वे विल कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला एंड ऑब्जर्व्ड इज समथिंग विच विल बी गिवन इन द डेटा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो फर्स्ट स्टेप में आई विल डू द कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटेड मास, और इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर करते हैं, वी डोंट कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर इन द कैलकुलेशन। मैंने यहाँ पर थियरी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, बट सिंस इट्स कंट्रीब्यूशन इज सो वेरी लेस वी नेवर कंसिडर दिस इन द कैलकुलेटेड मास का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड मास ऑफ कौन सा न्यूक्लियर है, ऑक्सीजन 816 वुड बी इक्वल टू Z into MP plus A minus Z into Mn, राइट? तो Z कितना है? So 8. 8 into, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है। Now, isn't the mass of hydrogen atom and the mass of proton same? Yeah, sir. 1.007. 1.0078 एंड प्लस A माइनस Z करो तो वापस आपको 8 मिलेगा, into Mn is 1.0087। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपको मिलता है, ओके यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, इट विल बी 8 कॉमन इनटू 7 and 8 15, 8 and 15 16, 1 0 and 1 point। Just use the calculator better। So 16.132. 16.132। So this we are getting in which unit? So atomic mass. Right? That is U, है ना? अब सेकेंड स्टेप में आई विल कैलकुलेट द mass defect which is
denoted as delta M, and that is equal to calculated mass minus observed mass. So calculated is 16.132 and observed is given 15.994. कितना आ रहा है? So 0.13. 0.13. Up to 4 8. digits at So least 0.13. 138. Fine. And that is in U. ठीक है. और अब थर्ड पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है. सो बाइंडिंग एनर्जी व्हाट फॉर्मूला डू वी यूज? So E equals MC square. No, now you don't have to use that. We have a direct conversion, na? In general, the binding energy now is directly to be applied like this. बार बार थोड़ी कैलकुलेट करना है आपको. It's a Oh steady state yeah, value so now. delta M into 931.4 upon. अपॉन अभी नहीं, अभी फिलहाल मैंने बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो इट्स डेल्टा एम इन यू multiplied by 931.4, you get the answer in MeV. So multiply this 0.138 times 931.4. So 128.53. 128.53 MeV. And finally, the mean binding energy per nucleon. उसके लिए just divide by 16, right? yeah 16 is the atomic mass. So upon A करेंगे. So 128.53 divided by 16 gives you what value? So 8.03. 8.03. Now, if you look at the answer in the solved part, it's coming out to be 7.98. The reason is here the mass defect they had taken 137144 and we have approximated as 0.138. That is why itna farak aa raha hai. But it's okay. 7.98 and 8.03. Approx 8 MeV का value है, which is of binding energy per nucleon. Flow समझा? फर्स्ट कैलकुलेटेड मास, सेकंड डिफेक्ट फाइंड करो, थर्ड एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, और फोर्थ डिवाइड बाय एटॉमिक मास करके यू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. So how much difference can be there, like final सी answer? ये वाला पार्ट अब 16.132 माइनस 15.994, व्हाट वाज द एक्यूरेट वैल्यू? यही था 138. No, sir. 1.137144. हाँ, तो 0.37144 और इतने वैल्यू के साथ 931.4 मल्टीप्लाई किया, इसीलिए आपको ये डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पर उनका वैल्यू 127.73 आ रहा है एंड फाइनल आंसर में 7.98 वहाँ आ रहा है और 8.03 यहाँ आ रहा है, बिकॉज आर वैल्यू इज टेकन टू बी स्लाइटली हायर ना. Yes, तो sir. नो वरीज अबाउट दैट. अ रेंज ऑफ 0.1 to 0.3 तक चलता है, कोई इश्यू नहीं है. Okay, sir. मतलब अप्रोक्सीमेट अगर करोगे तो ऑलमोस्ट 8 MeV दोनों में आ रहा है. दैट्स ओके. ठीक है. Okay, sir. इनफैक्ट ये वाला भी 16.132 एग्जैक्ट था क्या कि राउंड ऑफ किया है? No, sir, that's what came on the calculator. ओके ओके, ठीक है. So then it's okay. Whatever calculation we have done, it's perfect. But is the approach clear? How to find binding energy per nucleon? Yeah, sir. Okay. So I'll stop here for today. Next session में we are going to talk about radioactive decay and radiocarbon dating concept. Radiocarbon dating is the concept which is used to find the age of the fossil fuels. कि कितने साल पहले वो डिके हुआ था, डायनासोर्स कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे. फॉरेंसिक साइंस में भी रेडियोकार्बन डेटिंग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि द पर्सन वाज डेड
prior to what time, prior to what number of hours. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू होती हैं, and that is a concept which is related to radioactive decay. So that we'll take up in the next session on Saturday. Till then, whatever part I have discussed, please write the definitions for the topics which we have covered over here. तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं. So starting with introduction में the definition for nuclear chemistry, types of nuclear reactions का एक short note. उसके बाद ये formula just ध्यान रखो इसको. And then all the definitions of isotopes, isobars, mirror nuclei, isotones, nuclear isomers. Then even odd का ये table काफ़ी important है, 165, 55, 50 and 4 to be remembered. उसके conclusions क्या हैं that were important. N by Z ratio में how do we understand the stability of the nuclides. Magic numbers याद रखने हैं, nuclear potential और nuclear binding energy क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके related calculation and the numerical. Fine. So digest से go through करो और जो जो important questions है related to the topic we have covered that you have to learn and write it once. And please do it regularly. Don't wait for my instruction. कौन सा लिखना है कौन सा नहीं. You go through the topics and whatever you feel important, you just write it. Okay? Okay.